सो हेलो गाइस। आप जैसे कि मुझे जानते हैं कि आई डू द पॉडकास्ट विद द पीपल हु वर्किंग इन द इंडस्ट्री। तो हमारे साथ आज है, ही इज़ फ्रॉम द ट्रिपल आई टी इलाहाबाद एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग एज एस डी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एट मीशो। आई थिंक हम सब ने कभी ना कभी मीशो से शॉपिंग की है बिकॉज द प्राइस इज़ वेरी लो इन मीशो आई गेस। सो हाय सचिन। Yeah, hey, hi, Vinay. Hi, Tan. So, as you know that we are having a conversation specifically for the audience right now in the college. So, we will start with your introduction. Okay, yeah. So myself, Sachin Gupta, and I completed my graduation from Triple IT Allahabad in Computer Science branch. I completed my graduation in 2024. My first company was after placement. I joined 6 month internship, which is Alteryx. After that, I joined one Indian startup, which is Ellen Digital. I think most of the who's preparing for the JEE exams, they aware about that Ellen Career Institute and Resonance. Okay, so they have their digital apps also, so you can uh, purchase the course and take the classes, right? So I also work on the tech side there. Okay, so that is Allen Digital. This is my third company. This is Meesho. So both the three companies I work as a software engineer, and yeah, that's it. Okay. So, Sachin, we will start from the scratch. तो जनरली जो हमारे इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है या तो डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर। सो Okay. हाउ यू अप्रोच है, मतलब आपके पेरेंट्स ने बोला था या आपके किसी रिलेटिव में होता है ना कि अगर किसी रिलेटिव का बेटा या बेटी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाए तो बोलते हैं कि हमारा बेटा आईआईटीएन है एनआईटीएन है। तो हाउ यू स्टार्टेड विद दैट? नो, मेरे साथ में लाइक ऐसी चीजें तो नहीं थी। मेरी फैमिली कम्स विद ना बिजनेस फैमिली, एंड ओके। मेरी फैमिली में कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डॉक्टर लाइंस में नहीं है। सो बेसिकली मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी लाइक अराउंड 8th क्लास या 7th क्लास में। माई वन वाज माई फ्रेंड। ओके, सो ही इज माई गुड फ्रेंड। तो उसने बोला कि यार एक जेई के एग्जाम करके होती है, उससे अपने को एक अच्छा कॉलेज अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रेजुएशन करने की। ग्रेजुएशन तो करना ही था, तो जेई की प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग कोटा चले गए थे। कोटा में हम लोगों ने रेजोनेंस या एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, हमने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था उस समय पर। उसके बाद मुझे आगे की चीजें पता चली। मुझे नहीं पता था कि ऐसे अच्छा कॉलेज मिलता है, ऐसे प्लेसमेंट्स के चांसेस अच्छे बनते हैं, तुम अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेरी स्ट्रेटेजी थी मुझे भी बिजनेस लाइन में ही जाना है आगे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे क्योंकि आप आगे के लोगों से मिलते हो ना, तब आपका माइंडसेट और क्लियर होता है। क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, मैं एक सिंपल विलेज काइंड ऑफ जगह से आता हूँ जहाँ पर लोग इतने अवेयर नहीं है टैक्स से लेकर चीज़ों को। बट जैसे ही मैं सिटी में आया कोटा में, और उसके बाद जब मैं अपने कॉलेज में आया, तब लोगों की जो सोच है आगे के, उनके क्या प्लान्स है, आगे आगे क्या कैसे ग्रो कर रहे हैं, तब मेरे दिमाग की स्ट्रेटेजी चेंज हुई कि नहीं, अपने को ये नहीं करना है, अपने को सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइन में जाना है और आगे इस तरीके से इम्प्रूव करना है। तो मेरे साथ ये जर्नी थी इसके लिए। ओके। तो जैसा कि आई वाज लुकिंग एट, यू आर द बैच फ्रॉम 2024 राइट? तो उसी वक्त ही राइट। कोरोना भी चल रहा था, तो आई थिंक हाँ। व्हाट वाज दैट कुछ। सो हाँ, उस टाइम पे मुझे याद है, लाइक आई जस्ट गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द जे मेंस। सो दैट टाइम द टू आई थिंक मार्च 2020, 2020 में अनाउंस हुआ था कोविड, राइट? उस समय पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट वाज गिव्स एंड द कोरोना ड्यूरेशन, लाइक दैट टाइम we gave that attempt, but I cleared on the first attempt. I got the better rank on the first attempt. Uh, so basically, my first year and second half year I give as a online mode, virtual mode in the college duration. That was currently online. ओके। So so basically that time I have not much connections. I'm not aware the pupils. Like I just watching the YouTube videos and giving the assignment. I'm not aware how to make the preparation so I can crack that placements. After when I like come at the fourth semester, I started my preparation from scratch. So yeah, so that was a tough time for me. ओके। सो एज यू आर एचडी, which programming language you prefer? Uh,
For as a SD, if you are a beginner, I will suggest you should start with Java, yeah, or C++. plus plus. If you are a beginner, okay, and if you got like that will explain you better understanding of the like how the things are working inner level, like compiler, how the things run internally, how the system things, like you will aware about the byte level things in the computer. Otherwise, if you choose the dynamic language kind of Python na, so that will take much more time, but there are a lot of things. So I will suggest you should start with C++ and or Java. That will be a best. Okay. So I have right now I am a BC graduate and I am studying the DSA in Java. So what is your approach for the DSA? क्योंकि Okay. जो हम फिलहाल जो हमें जो फैकल्टी पढ़ाती है ना, वो ये अप्रोच बोलते हैं कि एटलीस्ट पहले तो क्वेश्चन को समझो, पेन पेपर उठाओ और स्टार्ट डूइंग ऑन द पेन पेपर। जैसे आप लॉजिक समझ जाओगे उसके बाद कोड पे जाना। सो हाउ यू अप्रोच फॉर दैट? Yeah, this is a correct approach. First, you should firstly understand the question. Just pick up your pen paper and what's the approach in your mind is going on. Na? So just take us some dummy example and solve it your like how will you solve it? Okay. Then you should write the code. Directly you not start the code, because if you stuck in your code na, that time, so you have to again come on the pen paper. So it will take double time for you. Or sometimes what happen na, you not think about the optimization approach, because if you start from the pen paper na, you Yeah. are able to think more optimization, because you think what will be the time complexity and the space complexity, can I improve it, you think on the pen paper side. ओके। सो Yeah. जनरली प्लेटफॉर्म जैसे कोड शिफ हो गया, हैकर रैंक हो गया या लीड कोड हो गया, तो विच प्लेटफॉर्म यू प्रिफर जनरली? Okay, all of these platforms are fine, but I matlab personally like the lead code. ओके। But I give like all of I solved on the GFG also, Codes app also, Code Forces I also give. But for the beginners or mid level, na, I personally feel Lead Code is a good one. ओके। So, as you are right now currently in a Meesho, so from college itself you get in placed into Meesho, or you get after that? Okay. No, I not place on that Meesho. Meesho comes in the last way. I am selected in starting first month. Okay, so my first company was Alteryx. I gave the interview, and in the first attempt I selected on that company. So Alteryx is just a data analytics kind of company. So I just give you some example like what the company business model. So company just you have to just upload the images of the data. They process the data and give the whatever the result you want on the process. They will give that result. So they designed that tool, and this is a B2B business, not B2C. So generally companies they use their products. Okay. So right now you are currently in Meesho. So how your experience is going on? Do you order from the Meesho or the some other company? No, that's depend. Generally, I'm not ordered in the Meesho, but I generally ordered from Flipkart, or because Meesho not sell the electronics item like mobile Yeah. phones and these, right? And so that's why I majorly order from the other e-commerce like Amazon or Flipkart. And we right now going through the AI era. So Yeah. and due to AI, there are certain layoffs currently is happening in every company. So is in Meesho there is a layoff or it is quite not? No, I not feel like due to this AI they make the layoff, because there is a lot of requirements. So they generally hired. Recently they hired a lot of people, but due to this AI, the delivery of the codes will improve. Like if without AI, if we are delivered only some line, let's suppose I just give him an example, 300 lines of codes you are delivering on a single day. Okay, Okay, without AI. So right now they are expecting be delivered at least 3000 plus lines of code in a single day. So AI just boost our delivery. How you are use that AI in your daily to day life. So basically we use the cloud LLM in our company. okay. So और मैंने जनरली भी देखा है लोगों को आफ्टर गोइंग इन अ कंपनी,
या किसी भी कंपनी जाने के बाद जो डीएसए करते ही हैं फॉर देयर ग्रोथ, सो आर यू डूइंग डीएसए और जस्ट डूइंग योर जॉब एज वेल? No, no, no. DSA definitely we should do. I personally suggest I do at Saturday or Sunday whenever I get the time. But I give the major focus on the system design because at the next level, you require the DSA. DSA is necessary, but you have to aware about the system designs and LLD. You have to more focus on that side also because there is a SDLC cycle. You know aware about that Yeah, SDLC. SDL software life cycle. Yeah, so basically, first, well, in the company, there is no things like you have to just make the code. This is just simple chunk for the our task. We have to make firstly system design, how we will make that classes as a oops level, and then we make a generic thing. So let's suppose in future, if I add something, so that will be a solid principle will be a follow here. So sure, things are not break or we will not make a lot of changes because your new changes. So we make that kind of designs after we make the write the code testing environment. There is a lot of stage prod and your pre-prod environment. We make the test, then somebody will review your PR, then it will go to the production. So there's a lot of cycles you have to follow. So whenever you grow your level now, there is this DSA is just a one part. We have to make another things also like system design is one of them. Okay. So right now we'll talk about the how you get into the Meesho. So can you tell me how many rounds were there? Okay, so in the Meesho for the SD1, for the SD1 or SD1, na? Yeah, SD1. Okay, for the SD1, their first round will be a online assessment round. Second round will be your DSA round, and third round will be a machine coding round. There will be we will provide real world problem which you have to solve by a kind of I can give you the example. There will be some LLD kind of problem. Let's suppose you have to design a tic-tac-toe kind of game. Okay, Okay. this is a round which is take around 1 hour 30 minutes, and last round will be your HR round or a manager round. So basically 4 round you can say. ओके। सो अभी तो आप मीशो में काम भी कर रहे हैं, तो जनरली ऐसा होता नहीं किसी भी कंपनी में आप तो एक आईआईटी है ना, मतलब गो थ्रू द ट्रिपल आईआईटी, बट देर आर सम पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द आईआईटी या एनआईटी, वो टायर थ्री कॉलेज से भी रहते हैं, तो यू हैव अ Mhm. कॉन्वर्सेशन विद दैट काइंड ऑफ पीपल, तो व्हाट यू थिंक दैट दे हैव डन बेटर, इन व्हाट पर्सपेक्टिव यू थिंक कि बीइंग इन फ्रॉम No, द, या your question is like if they come in our corporate, but या then how they are or before how they come. Like या your question is कि अगर कोई टायर थ्री का कोई स्टूडेंट है तो वो हाँ, हमारी कंपनी में किस तरीके से कैस आ सकता है हाँ पहला। किस तरह से, हाँ ये सवाल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सिंपल सा है, यू शुड मेक योर रेज्यूमे विल बी अ परफेक्ट लाइक योर कंपनी अगर किसी की रेज्यूमे को सिलेक्ट करती है तो हाँ। मिनिमम 80% टेक स्किल विल बी अ मैच। मिनिमम 80%। डेट सपोज कंपनी कोई भी ओपनिंग निकालती है तो हम्म। उसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट डालती है कि मुझे टेक में सी जावा आनी चाहिए, गो आनी चाहिए, और डेवऑप्स के अंदर ये आना चाहिए, जीसीएस अगर वो जीसीएस यूज करते हैं तो जीसीएस या एडब्ल्यूएस वगैरह। ठीक है, डेटाबेस के अंदर मोंगो के बारे में अवेयर होना चाहिए, माई एसक्यूएल। सो यू उसकी प्रोफाइल के अंदर 80% चीजें मैच करनी चाहिए। सेकंड थिंग, how many problems DSA you solves or achievements will be your another section. ओके। So some company shortlisted because you're their college tag. So if you have filtered by the 80%, but let's suppose company को 100 resume selects करने, तो they will give the priority first tier 1 colleges, then they will come to the your tier 3. But if you are उनकी मैच ही नहीं कर रही है 80%, अगर वो टायर 1 से भी है तो हम्म। कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करती है उस पर्सन को। सो बेसिकली फर्स्ट यू टायर 2 और टायर 3 से जो भी स्टूडेंट है उसको अपनी स्किल्स है उसके बराबर मैच करनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं आता है, he has to prepare for that, ओके। then there will be a higher chances to come in a good companies. मतलब हमें स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना राइट राइट, तो अभी उसके लिए जानने के लिए कि क्या स्किल्स हैं जो मुझे इस कंपनी के लिए जाना है, तो सबसे पहले लिंक्डइन पे चले जाओ। आपको है। किसी भी कंपनी के लिंक्डइन पे चले जाओ, आपको वो जॉब्स ओपनिंग मिल जाती है। हम्म। जस्ट क्लिक एंड चेक इट, क्या रिक्वायरमेंट है उधर और मुझे उसमें से क्या नहीं आता है। ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, सिंपल। ओके।
Yeah. So right now you are working in a company. So Meesho is also startup. So have you ever thought of working in startup as well? Kind of small startup which is not grow yet in your future or thinking about that? Meesho right now is not a startup. Meesho is right now is a public company. Yeah, Okay. Okay. I thought that ki I have to work that kind of company. There I got the opportunity to do lot of works. yeah, Like what happen? If let's suppose you work kind of Nvidia, Google, you will work on a particular feature. Not a you will not aware about the whole of the things ki how the things are working end to end, start to end, because you are a fresher. So they will give you lesser risk work. Okay, if you work in that level company na Ellen Digital or that Meesho level company, you will get the higher opportunity to do end to end level work. So there will be a chances कि आप जितना सीख रहे हो ना अभी और जो गूगल में अपॉर्चुनिटी मिली है उस पर्सन को, hmm, you have to aware about the lot of things of that single time. So this is a benefit of that work, if you आप स्टार्टअप में वर्क कर रहे हो या किसी ग्रोइंग कंपनी में काम कर रहे हो तो आप उसके बाद में जब आपको लगे यू फील लाइक कि हाँ मुझे चीजें आती हैं, देन यू कैन स्विच टू द दैट लेवल ऑफ कंपनी. दिस इज आई थिंक गुड अप्रोच. okay. So अभी फिलहाल आप शायद आई गेस आप बैंगलोर में राइट, बैंगलोर कर्नाटक। हाँ और राइट. जनरली मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स या बिग टेक कंपनीज बैंगलोर में ही है। तो करेक्ट. हाँ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बैंगलोर काइंड ऑफ, because I have heard from a lot of people there is high cost of living and along with that high traffic as well. So what is your take on that? या दिस इज करेक्ट लाइक हाई ट्रैफिक, बट दिस इज डिपेंड योर, मतलब आप किस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो. लाइक देयर इज अ हर चीज की सुविधाएं इधर. लेट सपोज इफ यू वांट टू स्टे गेटेड सोसाइटी देन इट विल बी अ कॉस्ट विल बी हायर. इफ यू वांट टू स्टे इन पीजी देन कॉस्ट विल बी अ lower for that. But in the middle range, if you are asking, so if you are a single person and want to stay, so your rent will be around 20K for 1 month. Highly costly, I guess. This is a costly. So at the time of college, what is your dream company? कि हाँ ये कंपनी आ जाए, इस कंपनी में चला जाऊँ तो लाइफ बन जाए काइंड ऑफ। That is good question. That time I was thinking, that time rubric, ओके, हाँ आई हैव हर्ड अ लॉट रूब्रिक, आई गेस। but lot of friends are, मतलब मेरे कई सारे दोस्त हैं जो रूब्रिक में काम करते हैं, but when I discuss them कि पे क्या काम करते हैं और कैसे चीजें होती हैं, then I feel कि I am in a good company. Because I because we judge that, उस समय पर अपन जज करते हैं कि किसकी सैलरी ज्यादा है हाँ, वो कंपनी होगी, अच्छी राइट. होगी जरूर। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू जज द कंपनी की. इस तरीके से होती हैं चीजें. वो आपको आगे जाके चीजें पता चलती हैं जब आप लोगों से वहां पर जो जॉब करते हैं आप उनसे बात करते हो तो पता चलता है. ओके, ऐसी कोई और जैसे अगर जैसे आप फिलहाल अभी तो आप कंपनी में है, बट एट द टाइम हम्म. व्हेन यू आर इन कॉलेज, हैव यू डन एनी मिस्टेक्स वेयर यू स्टिल रिग्रेट? तो ऐसी कोई चीज़ें होती है ना कि नहीं करनी चाहिए थी बट फिर भी हमने की है। मैं क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं कि आप मतलब किस रिगार्ड इन हो. टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट या इंटर्नशिप काइंड ऑफ थिंग, कि इससे हाँ. बेहतर, हाँ, और अच्छी कंपनी में हो सकता था बट ड्यू टू सर्टन मिस्टेक्स ऑफ माइंड मैं नहीं जा पाया। हाँ, करेक्ट. जो मैंने बताया वो कि फर्स्ट 1.5 year that was online, so I'm not connected with the pupils की what they are doing from the starting. If I start from the first semester na, so I will cover the advanced DSA also. So this is my one mistake which I do in my college duration, that I feel. ओके, सो Because ओके, because in my college, I was not aware that there was one system thing like seniors will teach us DSA at हाँ, between 11 to 1 in the night, 11 p.m. to 1 a.m. Okay, they will take that 2 hour session. They teach us, and they suggest us ki which YouTube channel we have to follow it and which problem we have to solve it. And generally
क्या चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए जिससे प्लेसमेंट में पूछी जाती हैं। हम्म। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, और मैं फोकस भी नहीं करता था उस टाइम पे इतना, क्योंकि दैट वाज ऑनलाइन मोड। जब आप ऑफलाइन आते हो, आप लोगों को देखते हो करते हुए, तो आपको फील होता है यार दिस इज इम्पोर्टेंट, वी हैव टू डू, राइट, बिकॉज दिस इज अ एक्स्ट्रा थिंग। वी गिव द प्रायोरिटी फर्स्ट, लाइक कि कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स हैं, ये करना है, सीजी आएगी इससे अच्छी, बट वो चीज़ों की इंपॉर्टेंस आपको अंदर जाके पता चलता है। करेक्ट। या। या सो कैन यू टेल मी योर range of your salary? I don't want the exact, but just a range I got. दिस इज, यू कैन से बिटवीन रेंज ऑफ 20 to 30। Okay, I got it. या दिस इज अ बेस। So, are you still will work in the Meesho itself, or will change your company in some year or some month later? No, recently I have no any that kind of plan. My plan is because I'm getting the good opportunities and डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, so that's why I feel कि अभी तो कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। If in future अगर बनता है तो वो अलग है। और जनरली अभी हमने देखा है कि जो किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता। तो व्हाट इज़ योर टेक? क्योंकि जनरली अभी हम टेक में देख रहे हैं जो मैनेजर्स होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, मतलब एक एक्सपेक्टेड टाइम के अलावा भी काम करवाते हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? ओके, ये चीज़ें हैं, बिकॉज आप आज के टाइम पे ऐसा है कि अगर आपसे जितना काम एक्सपेक्ट किया जाता है वो हम्म। आपसे उसका डबल या 1.5 करवाया जाता है, ठीक है। सो अब ये आपके ऊपर है, आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे या नेगेटिव वे में। कुछ टाइम तक ये अच्छा लगता है क्योंकि आपको नई 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 चीजें मिलने करने को मिलती है, बट ये बुरा तब लगता है जब सेम काइंड ऑफ वर्क आपको अगेन मिल रहा है। तो आप कोशिश करो कि अगर आपको टास्क मिल रहा है कोई भी, हम्म। तो दैट विल बी अ न्यू थिंग, सो आपके चांसेस बनेंगे कि आप एक कम टाइम के अंदर ज्यादा चीज सीख पाओगे, बिकॉज यू कैन सिलेक्ट द टास्क इफ यू आर डूइंग द थिंग्स आर गुड। ओके, तो और देखो, अगर आप नहीं करोगे तो इट विल इट ये आप ही के लिए अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आप तो किसी भी चीज को कर रहे हो, कोई भी चीज आपको मिली है, तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मुझे थोड़ा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करके करना है, इसके लिए कोई मना नहीं करता है, ठीक है। बट ऐसा होता है पैरेलल में आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी करने के लिए, सो यू हैव टू मैनेज देम एंड टेक इट एज अ पॉजिटिव वे, तब तो चीजें ठीक रहेंगी। अगर आप सोचोगे यार कि काम 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 कैसे होगा ये वाला, तब तो वो हमेशा ही टॉक्सिक ही लगेगा। करेक्ट। बाकी अगर ये कंटिन्यूअस वे में हो रहा है, देन यू थिंक कि आई हैव टू सच आई एम नॉट अ करेक्ट करेक्ट प्लेस। Okay. So currently you are in a remote, hybrid, or the complete on-site? No, this is a complete on site। Okay. So anything do you want to tell the viewers who are preparing for the any kind of software developer? Because right now we know that AI is taking not only the job, but Yeah. the AI is, और अब जनरली हो रहा है ना कि कोई हर महीने कोई ना कोई नया एआई आ रहा है जो एक चंक ऑफ डोमेन को काइंड ऑफ वैनिश ही कर रहा है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नो, आई सच फील लाइक एआई की वजह से चीजें, मतलब पहले क्या था, लेट्स सपोज डीएसए का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई हाँ। भी लीड कोड के अंदर कोई भी अगर नई प्रॉब्लम आती है, हम्म। अगर किसी ने उसका सॉल्यूशन डाल रखा है तभी अपन देख पाते थे, राइट। हाँ। दैट वाज ओनली सिंगल प्लेस, या फिर अपन वेट करते थे कि यूट्यूब में कोई सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेगा तब हाँ। पता चल जाए अपने को। दैट इज ओनली वन प्लेस जब एआई नहीं था। अब लोग चीजें देख लेते हैं एआई में डाल के, सॉल्यूशन मिल जाता है, हम्म। ठीक है। सो एआई अपॉर्चुनिटी भी है लर्नर्स को कि नई नई चीजें जानना। अगर अपने को कोई नई टर्म आती है तो अपन क्वेरा पे देखते हैं, जनरली हम्म। सर्च करते हैं उसको, हाँ। या स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करते हो आप लोग, अगर किसी ने डाल रखा है उसके बारे में तो, हम्म। राइट। आजकल लोग सिंपल चैट जीपीटी करते हैं, या जो भी एआई है, जेमिनाई यूज करते हैं, क्लाउड यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर हम्म। यूज के साथ। तो चीजों के जवाब मिल जाते हैं सबके, तो दैट्स मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर टू हेल्प यू, राइट, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। सो बेसिकली इसका इस तरीके से नहीं लेना चाहिए यार एआई है तो फिर चीजें मुश्किल होंगी। एआई की वजह से आपको चीजें लर्न करने में इजी ही रहेगा, ठीक है। सो लर्नर मतलब जो भी व्यूअर्स हैं, अगर वे तैयारी कर रहे हैं तो दे हैव टू इम्प्रूव देयर डीएसए,
they have to start DSA, like they can follow any channels. That time I follow, like for the foundation I follow Saurabh Shukla, and by the Striver I solved the whole of 350 problem test case, problem sheets, right? You have, I think you are aware about that, right? Yeah. Yeah, so that time I solved that one, and for the advanced DSA, I solved the code forces contest. So I improve my DP's problems. So basically, yeah, by the AI, you have to use that and improve your DSA. Then you have to go to the your subjects. Subjects means your database, your operating system, your computer network. Okay, basic foundation. You have to aware the basic things. Ki how the difference between the SQL, no SQL, why the no SQL requirement when we use that one. Okay, and this is a basic need. After then you have to shift or system design will shine you, right? कि अगर 10 लोग हैं उसमें अगर आपको सिस्टम डिजाइन आता है तो यू विल बी गेट अ हायर अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट दैट, राइट? बिकॉज सिस्टम डिजाइन अगर किसी पर्सन को आता है HLD या LLD में, he Mhm. is a good guy, so there will be a higher chances to select that. So yeah, this one. Okay, thank you, Sachin. It was nice meeting you. Yeah, So, yeah.